Hello friends, welcome all. In this video, we are going to discuss the notes of Barren Woman, the, which is written by Sylvia Plath. As you all know, uh, Sylvia Plath stands as one of the most compelling voices in 20th century literature, known for her raw emotional intensity, confessional style, and striking imagery. She was born in 1932 in Boston, Massachusetts. Plath was a prodigious talent from a young age, publishing her first poem at just 8 years old. ମାନେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ କବିତା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁନଥାଉ ସେ ବୟସରୁ ପୋଏମ୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୋଏମ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଲି ପୋଏମ୍ସ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଏମ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ ମାମା ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଶିଖିନଥାଉ। ସେ ବୟସରୁ ମାନେ କେତେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ବୟସରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଗୋନିଟା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତଡ଼ପେଇଛି। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କଞ୍ଜୁଗାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏଇଭଳିଆ କନଫେସନାଲ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଏ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲା ଇନ୍ 20th century, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୋ ହର୍ ପୋଏଟ୍ରି and prose explores themes of identity, mental illness, and gender roles, and existential despair often drawing from her own turbulent life experience. The Bell Jar होची तांकर ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। सेटा पब्लिश होबार बोधे 6 मास परे से सुसाइड करछंती। So her semi autobiographical novel The Bell Jar provides a hauntingly vivid portrayal of a young woman's descent into mental illness. माने से କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଯେ ଥିଲା ତାର ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସିଲଭିଆ ପ୍ଲାଥ୍ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ସିଏ ବି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଥର ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିରରିଂ ପ୍ଲାଥ୍ସ ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। ହର୍ ପୋଏଟ୍ରି କଲେକ୍ସନ୍ particularly Ariel showcase her mastery of language, a blending dark and visceral imagery with sharp lyrical precision. आइकोनिक पोएम्स लाइक डाडी, तांको माने डाडी पोएम रे तुम देखिबो से केते घृणा करछन तांको बापांगु। भल पाइबा अछि प्लस घृणा अछि, माने निजे पढिले ही जानि परिबो तांको बापांगु कोन कोन कहि गाली दैछंती, पुनी तथापि तांको बापांगु से झुरुछंती। लेडी लाजरस, एरियल that capture a sense of both defiance and fragility, making her work deeply resonant and timeless. Despite her immense literary talent, Plath battled severe depression throughout her life and ultimately taking her life in 1963. तांकर पुओ झियंकु गोटे घरे बंद करदेबे, गोटे घरे बंद करिकी आर गोटे रूम रे जाइकी माने चलंदा ओभन भितरे तांको हेड रखिकी से सुसाइड कर देथिबे। तेणु तांको लाइफ तांको हस्बैंड जे तांको धोखा देथिबे आ जने गोटे सुंदरी झियो सहित तांको रिलेशन थिबो। तेणु सेटाकू से बोधे बर्दाश्त करि पर नथिबे। फर्स्ट थिंग छोट बेलू एभला टर्चर सहिसन तांको बापांकोटू तांकर दूरता, तांको बापांकर डेथ सेटा तांको गोटे बहुत बड़ धक्का देथिबो। तापरे तांको हस्बैंड को जदिও तांकर लव मैरिज थिबो, फर्स्ट किछि वर्ष तांको हस्बैंड के साथ भल रिलेशन थिबो, तापरे तांकर ए जो विश्वासघातकता काम तांको बहुत कष्ट देथिला। तेणु से लाइफ रे खूब एका हो जाइथिले, डिसोलेट हो जाइथिले, समस्तंकोटू काहा सहित शेयर करि पर नथिले। तेणु सेई कष्टटा तांको बाध्य करिथिला निज जीवन को सारिबा पई। सो हाउएवर हर legacy endures, influencing generations of poets and readers alike. Through her fearless exploration of human psyche, Plath not only redefined confessional poetry but also left behind a body of work that continues to inspire, challenge and move audience worldwide. तेणु आज आम डिस्कस करिबा barren woman। तो कौन barren means अनुर्वर, woman माने स्त्री लोक। उर्वर जमी कौन दिए आमको फसल दिए, आमको अमल दिए, किंतु आम इनफर्टाइल क्या कहू जी जोठी फसल हो पारे, जोठी गोटे घासटे कौले ना ताको आम को अनुर्वर। तो barren woman को देखिले आमर सिंपली ओडिया लैंग्वेज रे बांझ मीन्स जहाँकर पुओ झील हो न थाए से जो स्त्री लोकटर दुख कौन समाज रे तांको केमती लोक मैंने निंदा करि केमती अनअस्पिशियस बोली मानि थांती, ता जीवन कष्ट कौन एई पोएम रु जानिबा। So Sylvia Plath's poem Barren Woman is a powerful exploration of infertility.
इमोशनल एम्प्टीनेस ता भितर से निजे केमती शून्य हो जाए ता भितर जो भयटा थाए ता भितर जो दुखटा थाए एंड द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन वुमेन थ्रू स्ट्राइकिंग इमेजरी एंड मेटाफर Plath paints a picture of a woman who feels desolate and unfulfilled, likening herself to an empty museum, a space that should be full of life but instead remains sterile and cold. म्यूजियमटा बहुत सुंदर होता है समस्ते जाइए एंजॉय करती किंतु कौन हम जब गोटे म्यूजियमटा एत बड़ सुंदर गोटे अट्टालिका होता भितर फांका थी भितर लाइफ नथिबो तेणु गोटे झीर जीवन सेमती आम सोसाइटी एक्सपेक्टेशन थाए गोटे नारी जीवन प्रजुज्य केवल तार परवर्ती पीढ़ी संतान जन्म करवा तेणु से कथाटा एठे देखा जाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कौन अच्छी Sylvia Plath wrote Barren Women during 1960, a period when traditional gender roles were still dominant. Gender roles सेतेबेले बहुत थिला तेणु मदरहुड कहते नारी जीवन पूर्णता होची मातृत्व लाभरे तेणु जे केबे माँ हेनी ता नारी जीवन सार्थक हेनी बोली कहा जाए. So motherhood was considered as a defining aspect of women's identity. The feminist movement was beginning to challenge these norms, but the pressure for women to conform the societal expectation remained strong. Plath herself struggled with the conflicting desires of career and domestic life, particularly in her marriage to the poet Ted Hughes. तो टेड ह्यूज जे तांकर हस्बैंड थिले तांको सहित तांकर जो कहूली कंजुगाल लाइफ रे बहुत सारा प्रोब्लेम थिला ए सब नहीं कि तांको लेखा रे मध्य प्रतिफलित हुए तांको लेखा रे मध्य आमे से भले गोटे नारी जीवन रो दुख जंत्रणा तार संघर्ष को तांकर प्रतिटी पोएम रे आमे पाई थाउ. So during this time a woman who could not conceive were often stigmatized or pitied. से समय रे जदि गोटे झील कनसीव करि पर नथिला तार जदि गर्भ संसार हे पर नथिला ताले ताकू स्टिग्माटाइज्ड करा जाउथिला ताकू कलंकित करा जाउथिला ताकू निंदित करा जाउथिला ताकू घृण्य चक्षुरे समाज देखुथिला. आज मदरहुड वाज सीन एज देयर प्राइमरी पर्पस सते जेमति ता जीवन नारी जीवन रो मुख्य लक्ष्य होउची मातृत्व. Plath's poem reflects this deep-seated cultural belief and personal anguish that accompanies it. The barren woman in the poem is not just childless in a literal sense, but also emotionally and psychologically empty, mirroring Plath's struggle with mental illness of self-worth. So, barren woman माने नुहे जे खाली निसंतान हेबा. Barren woman means जोड़ा कहती खाली पड़ जावा जो मट्टीटा माने गोटे नारी जितेबाला तार पाखे पिला न थाए से केते फांका हो जाए केते शून्य स्थान ता जीवन रे थाए ता भितरटा भॉइड मीन्स एम्प्टीनेस भरिकी थाए खालीपण भरिकी थाए ता सहित कि मिसंतीनी ता सहित कि हसंतीनी ता सहित कि बसंतीनी. तेणु से जो स्ट्रगल गुड़ा को ये देखी मुख्य थीम इनफर्टिलिटी एंड इमोशनल डिसोलेशन समस्त गोटे इमोशनली डिटाच हो जाए. दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम. The pain of being unable to bear a children. The speaker's sense of loss is profound and her identity feels incomplete without motherhood. Our societal expectation of a woman. The poem critiques the pressure placed on women to become mothers. The speaker's barrenness makes her feel worthless. As if her existence lacks meaning. जमती कि गोटे नारी जब छुआ जन्म करुच्ची तार बंचिक रहा किसी मूल्य नहीं. हर एक्जिस्टेंस डजंट हैव एनी मीनिंग. Isolation and loneliness. The barren woman is emotionally and physically isolated, feeling like an empty museum. तेणु म्यूजियम जोटा कि प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस बट नाउ इट्स नेग्लेक्टेड, नाउ इट्स साइलेंट, इट्स जस्ट इमोशनलेस, इट्स जस्ट लाइफलेस. सो दी बॉडी एज ए सिंबल ऑफ फेल्योर. तेणु तार ये जो सुंदर चेहरा पाई तार देहर मूल्य किसी ना जब से गोटे संतान दे पारुनी. दी पोएम पोर्ट्रेज दी फीमेल बॉडी एज ए स्पेस दैट इज सपोज टू नर्चर लाइफ बट इनस्टेड इफ इट रिमेन स्टीराइल रेनफोर्सिंग फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड डिस्पेयर. तेणु जीवन में केते डिस्पेयर भरी जाइए केते हताशा भरी जाइए केते निराशा भरी जाइए. डिजायर फॉर पर्पस एंड लिगेसी. द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर समथिंग टू गिव हर एक्जिस्टेंस मीनिंग जस्ट एज म्यूजियम इज मीन टू होल्ड आर्ट एंड हिस्ट्री. विदाउट दिस सी फील्स लाइक फेल्ड एंटिटी. जमती गोटे म्यूजियम रे आम हिस्ट्री प्रिजर्व कर रखी था, आर्ट प्रिजर्व कर रखी था, गोटे नारी जीवन सेमती निरर्थक जदि तार संतान नहीं. लिटरेरी डिवाइस कौन यूज होती मेटाफर यूज कर कौन मेटाफर यूज होती बैरेन वुमेन को आमर कंपेयर कर म्यूजियम सहित. तो मैंने देखी व्हिच एम्फासाइज हर लोनलीनेस एंड लैक ऑफ पर्पस. इमेजरी vivid descriptions such as marble pillars and great barren hulks of stone
create cold, sterile atmosphere, reflecting the speaker's internal emptiness. जो इतने विराट बड़ा बड़ा प्राचीर पिलर सब तैयारी होती है, जो स्टोन स्कल्पचर होती, that is lifeless. जेमती से म्यूजियम टा लाइफलेस, से जो बैरेन वुमेन लाइफ टा मध्य सेमती लाइफलेस. सिंबलिज्म कौन? The museum represents both the speaker body and her unfulfilled potential. The statue inside symbolizes frozen. तमाम भीतर जो स्टैच्यू अच्छी सेटा फ्रोजन ही जाइए, सेटा कोल्ड ही जाइए, सेटा लाइफलेस ही जाइए. सो ब्यूटी रादर दैन लिविंग क्रिएशन. जदि गोटे झील गोटे लाइफ ता भीतर क्रिएट कर न पारुची, ताहेले से ब्यूटी होची लाइफलेस. तार सुंदरता, तार ये देह वैल्यूलेस. पर्सनिफिकेशन. द स्पीकर्स बॉडी इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी. गोटे नारी देह को तुलना करा जाइए, गोटे पर्सनिफाई करा जाइए, सजेस्टिंग दैट इट लॉन्ग्स फॉर लाइफ बट रिमेन्स साइलेंट एंड पावरलेस. Tone. The tone is melancholic, resigned and filled with quiet suffering. There is an overwhelming sense of emptiness and longing. Contrast कौन? The speaker contrast the grandeur of museum with its emptiness, mirroring her own paradox of being physically present, but as she is always emotionally hollow inside. So summary चला देखिबा. Sylvia Plath's poem Barren Woman expresses the deep sadness and emptiness of a woman who cannot have children. The speaker feels like a museum but without a statue, a grand and impressive building but empty and lifeless inside. इतने बड़ा म्यूजियम अच्छी, ता भितर आर्ट नहीं, ता भितर स्कल्पचर नहीं, ता भितर स्टैच्यू नहीं, ता माने सेटा एम्प्टी, दैट इज लाइफलेस. Like that, here the museum is compared with the body of a woman which is biologically designed for fertility but remains barren, making her feel incomplete. Plath also uses image of a fountain. Fountain means जो पानी पड़े तमे देखिबो फुहारा, तो से पानी गुड़ाक लिव करुच्ची, जम्प करुच्ची, ऊपर देखिए पानी गुड़ाक आसे पुणी से तल मिसे, पुणी से पानी जाए पुणी तारी ऊपर को आसे. तामाने कौन? दैट सिंक्स बैक इनटू इटसेल्फ. से जोठी जाउची पुणी तारी आडू फेरी आछी. तामाने कौन एटा? दैट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल व्हिच सिंबलाइजिंग द वुमेन्स फिजिकल प्रोसेसेस दैट रिपीट विदाउट एनी रिजल्ट. The fountain is described as a non-hearted and blind to the world. Non-hearted means गोटे सन्यासिनी. तो जो मैंने सन्यासिनी जीवन कौन कौन पार्थिव सुख न थाए, तेणु गोटे बैरेन वुमेन सेमती ता जीवन किसी मटेरियल प्लेजर न थाए. आउ कौन? एंड इट्स इज ब्लाइंड टू द वर्ल्ड. सी दुनिया ब्लाइंड मीन्स दुनिया समस्त डिटाच हो जाए, समस्त कौन हो जाए, अलगा हो जाए, लोक मैंने ग्रहण कर अशुभ बोली मानती, निंदा दियंती. That means it's pure like a non, but yet it's isolated. So just like the speaker who feels disconnected from the natural process of creating life. The marble lilies in the poem symbolize beauty without fulfillment. जमती कि marble lily देखिबा को सुंदर किंतु तादर जो दुर्गंध बाहर से तो के पसंद करते नहीं. Lilies are often like to life and purity, but here they are cold and lifeless, most like the speaker's existence. Society may see her as beautiful and valuable, but she feels she is missing something essential, that is motherhood. तापर कौन है? इन ए मोमेंट ऑफ फैंटासी द स्पीकर्स इमेजिन्स हरसेल्फ एज द मदर ऑफ व्हाइट नाइक. सी निजको कंपेयर कर मदर ऑफ व्हाइट नाइक. व्हाइट नाइक माने कौन? नाइक होती गॉडेज ऑफ विक्टोरी, किंतु व्हाइट ये कहुई. व्हाइट माने ये कौन कह? व्हाइट मीन्स लाइफलेस. सी निजको भावी मुझे व्हाइट नाइक एंड सेवराल बाल्ड आइड आपोलोज. आपोलो होती जे कि लाइट देवता, जो म्यूजिक देवता, बट बाल्ड आइड मीन्स से भाया माने किसी जहाँ जीवन ना. ये सब आब्स्ट्राक्ट जिनस को भावी संतान बोली, जननी बोली निजको कंपेयर कर. लाइक नाइक इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड अपोलो इज द गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, सजेस्टिंग दैट शी ड्रीम्स ऑफ गिविंग बर्थ थ्रू समथिंग ग्रेट. हाउएवर इवन इन हर इमेजिनेशन हर चिल्ड्रेन आर स्वप्न जदि देखी कहीं बास्तव में ब्लड फ्लेश चितई छुआ तो पाखे ना, तेणु से सब माइथोलोजिकल चरित्र को नहीं, एमती माइथोलोजिकल चरित्र नहीं पूर्णता दे पारना. कहीं इवन दो चिल्ड्रेन आर डिस्क्राइब्ड एज बाल्ड आइड, implying that they are incomplete, those are flawed. So this reflects her inability to escape the reality of her barrenness even in her dreams. तेणु तो स्वप्न भी से केबे मां हे पारुनी. Her fantasy is quickly replaced by the presence of the dead, which could symbolize the children she never had or the parts of herself she had lost. The dead demand her attention, showing how thoughts of loss and failure haunt her.
The poem ends with the speaker describing herself as a blank-faced and a mom as a nurse. Blank faced माने कौन आम जो डॉक्टर पाक जाऊ नर्स पाक जाऊ सब हस हस मुँह देखू सब आमको गुड साइन दिखती आमको आश्वासना दिखती आमको कंफर्ट दिखती किंतु एठी ब्लैंक फेस्ट मीन्स से नर्स रो एक्सप्रेशन जना पड़ी कि सी आउ केबे ता जीवन रे मां ही परिबो नाही. So a nurse is usually associated with taking care of a new life, but here she is silent and emotionless, as if she has no life to care for. Plath writes the poem in free verse, meaning there is no fixed rhyme or rhythm. This reflects the speaker's chaotic emotion and her feeling of being disconnected from the natural cycle of fertility. In Barren Woman, Sylvia Plath explores the emotional pain of a woman who cannot have children. The poem highlights both personal sorrow and the societal pressure placed on women to become mothers. Through powerful imagery, Plath like an empty space longing for life but unable to create it. So, Barren Woman is a deeply personal and poignant poem that encapsulates the despair of infertility. से जो दुख infertile हबार, the societal pressure surrounding it, एवं जो societal pressure थाए समाज रे जो दाबी थाए गोटे नारी ठू तार motherhood को नहीं की. Through powerful imagery and metaphor, Plath masterfully conveys the pain of feeling incomplete, unworthy and isolated. So the poem not only speaks to personal struggles with motherhood but also reflects broader feminist themes about the limited roles assigned to women. So Plath's ability to transform personal anguish into universal themes is what makes her poetry so impactful. Barren Woman remains a hauntingly beautiful exploration of loss, identity and the deep human need for purpose. It stands as a testament to Plath's skill in capturing raw emotion with lyrical brilliance, solidifying her legacy as one of the greatest poets of 20th century. भाभी तुम मैंने पोएम टी बुझी पारि थिबो स्क्रीनशॉट नहीं जाओ निहाती तुम एग्जाम रे हेल्प करिवो. So for more videos do like, share and also give your opinions in the comment section. Have a good time. Take care. Jai Jagannath.